कल असम में 2025 के पहले चरण का पंचायत चुनाव आयोजित होगा। 2025 के पंचायत चुनाव के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल के मनोनीत प्रत्याशी पिछले कुछ दिनों से चला रहे थे अपने अपने चुनाव प्रचार अभियान। उसी क्रम में असम के शोणितपुर जिला परिषद के अंतर्गत गुप्तेश्वर जिला परिषद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्मल दास भी चला रहे थे अपना चुनाव प्रचार अभियान। 2 मई 2025 को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनाव में भारी मतों से विजयी होने की आशा व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी के मुक्तेश्वर जिला परिषद के प्रत्याशी निर्मल दास ने इस संबंध में आज उन्होंने मीडिया में अपनी टिप्पणी दी। पंचायत निर्वाचन 2025 और पंचायत निर्वाचन अपनी गुप्तेश्वर जिला परिषदर भारतीय जनता पार्टीर प्रक्षेपित प्रार्थी कि থাকিব আজি কিন্তু ৰাইজৰ আহ্বান আপোনাৰ হয় ৰাইজৰ ওচৰত এটা আহ্বান থাকিব যেহেতু কেন্দ্ৰত মোদী চৰকাৰ আছে আমাৰ দিছপুৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ আছে আৰু আমাৰ ঢেকাজুলিত বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া আছে গতিকে আমাৰ উন্নয়ন যদি লাগে বিজেপিৰ পক্ষে থাকিব লাগিব আৰু বিজেপি থাকিলেহে আপোনালোকৰ উন্নয়ন হ'ব গতিকে ৰাইজৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ যিটো দলে আপোনালোকৰ উন্নয়ন কৰি আছে আপোনালোকে যাতে সেই উন্নয়নৰ পক্ষত থাকে আজি ভ্ৰষ্টাচাৰী কংগ্ৰেছৰ লগত থাকি লাভ নাই যেহেতু তেওঁলোকে 65 বছৰ কাল তেওঁলোকে মাত্ৰ ভ্ৰষ্টাচাৰীয়ে ভ্ৰষ্টহে কৰিলে দুৰ্নীতি কৰিলে আৰু দুৰ্নীতি মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আজি বিজেপি দলে দিনে নিশা কাম কৰি আছে আৰু আগন্তুক দিনতো কাম কৰিব আৰু ময়ো সেই দুৰ্নীতি মুক্ত গুপ্তেশ্বৰ জিলা পৰিষদ গঢ়িবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম।